Today we are going to talk about visual reasoning. So visual reasoning is an important part of your MBA entrance exam. Not every time there can be or there will be a question on visual reasoning, but there are many exams apart from CAT also which will have visual reasoning as an important parameter or as an important question. So especially in case of exams like IFT, ZAT or MAT etc., there are many questions on visual reasoning, as well as students who are appearing for bank PO, they will also be facing a lot of questions with respect to visual reasoning. Now अब हम ये समझते हैं visual reasoning होता क्या है. So visual reasoning is that you see something and then you reason out certain things, or you analyze basis on the visuals that you see. What can be the visuals? So visuals are like, if you see, if suppose if there are three friends that you have, two of them are twins, so visually they look very much alike. The third one is not a twin, so he or she doesn't look like them. Okay, so when you have to tell who is the odd one out, you can point out that the one who is not a twin is the odd person out. Why? Because visually he is not matching with the other two. So that is just one example of visual reasoning. Visual reasoning can also be interpreted as that there is certain kind of a figure that has been given to you and you are asked to interpret as to what will be the next figure in that series. So supposedly you are given 5 figures or like 4 figures, like 1. Okay. Now you have been asked to tell what is the next figure in the series. Now visually looking at this, you know or you can guess that how the figure has been changing shape. It is turning clockwise and further clockwise and further clockwise, and then further suppose it becomes like this. It is not fully perpendicular, but it is little bit more slanting. So this becomes the next figure in this series of 4 items. So this is the visual reasoning. Visually having a look at this, you are able to identify कि next figure इस series में क्या होने वाली है. या एक और example लेते हैं. Suppose there is another series. Okay. Suppose this is a series of these 3 figures. Now if we are expected to know what will be the next figure after this, then how will we interpret? We have a look at this and see that there are 4 squares, and in the square there is another figure. Here it has got 4 sides, here it has got 3 sides, here it has got say 2 sides, and in the last one, so there has to be something which has got no sides. So either it can be a dot, it can be a circle, or it can be a dot, or maybe it can be any one of these two. Okay, so the figure which is given in the last block will have to be something which does not have any sides, or which has got just, am I correct? No, I am not. Because this has got 2 sides, so it has got to be something which has got just one side, so it will have to be one single line. That is how the difference becomes. आपको पूरे अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है, जो विजुअली रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उसमें क्वेश्चन मेकर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है. Now let us talk about what can be the various kinds of problems that you face in visual reasoning. So one such thing can be, as I mentioned, there can be some series which is given to you. So आपको सीरीज में जज करना है कि लास्ट में कौन सी सीरीज है जो उसके साथ में मैच करेगी. Okay. Now there can be something which is like an analogy. Analogy is जब आप 2 चीज़ों की रिलेशन के बेसिस पर किन्हीं और 2 चीज़ों की रिलेशनशिप को आप जज करते हैं. Now suppose here again we have got a figure, and suppose if this is analogous to
O's. This. Okay. Then how else is analogy? Okay. Now अगर आप ये फिगर देखें तो then you will see that there is a square which is common to all these three figures. Within the square here there is a triangle inside a square. In the analogy, the triangle has become the outer figure and the square has come inside the triangle. In this way, if we follow the same analogy, here there is a circle which has got a pentagon inside it. So, if we have to draw the analogy, you will have to have a pentagon here and there will have to be a circle inside it. Okay? So this is what we call as analogy, which is like making a relationship between the various figures. First we talked about series, then there is analogy. Let us see what else can be there. Okay. The other thing which you can face is something called as paper cutting. Okay. Let me write it here. Now what does paper cutting mean? Paper cutting is basically trying to again ascertain how well you can understand कि अगर आप पेपर को फोल्ड करते हैं उसको आप किसी तरीके से कट करते हैं और उसके बाद पेपर को ओपन करते हैं तो पेपर में कैसी शेप बनेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ स्क्वायर then it is folded into half, then again say it is folded into half. Okay, or let me make it a smaller half. Okay, now ये पेपर को आपने एक बार ऐसे आधा फोल्ड किया, उसके बाद इसको पहले सपोज इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद इसने आपने ऊपर से इसको नीचे फोल्ड कर दिया, so you are getting this kind of a small square, which is actually 1/4 of this bigger square. Now what happens in case you cut the paper from this corner? Okay, now remember how we have folded. We have folded it from this side to this side and then this side to this side. Okay, if you cut the paper from here, it will give you a different pattern. If you cut it from here, it is going to give you a different pattern. If you make a cut over here, it is going to give you a different pattern. Are you understanding? Now suppose if we make a cut here and we open the paper, then this will be like the paper and you will have 4 holes on the paper like this. If you make a cut over here, which is like this has been folded over here, so basically you are making a cut. How do you understand? इसको समझें कैसे? आप इमेजिन कीजिए ये जो लास्ट में फिगर आपके पास आई है ये किस तरीके से आई है. आपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया है तो ये साइड इसके ऊपर चलेगी. इसके बाद आपने पेपर को ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, सो दिस इज द कॉमन साइड. यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, हम इस फील्ड की बात कर रहे हैं. ऊपर से ऐसे फोल्ड किया, हम फिर इसी फील्ड की बात कर रहे हैं. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये फील्ड यही रहेगा और बाकी सारा पोर्शन में ये स्प्रेड आउट हो जाएगा. तो ये आपका जो होल है वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा. ऐसे ही इसको दोबारा देखते हैं. जैसे आपने बीच में मान लो यहाँ होल किया था, आपने पेपर को सेम में इस तरीके से स्प्रेड करा. आप इमेजिन कीजिए कि आपने यही फिगर को उठा के यहाँ रख देना है, लेकिन ये फिगर यहाँ पे आएगी कहाँ? ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? ये डिसाइड करेगा कि आपने सही से क्वेश्चन को आंसर किया है या नहीं किया. अब अगर इसको हम करेक्टली एसर्टेन करते हैं, दैट मीन्स दिस स्क्वायर इज फिटिंग ओवर हियर. ये स्क्वायर यहाँ फिट होता है, मैं इसे यहाँ कट करता हूँ. इसका मतलब इसके चारों तरफ की सिमेट्री के हिसाब से मेरे पास एक होल हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ, सपोज देयर इज अ कट ओवर हियर, व्हिच मीन्स कि ये जो कट है ये पेपर ऐसे फोल्ड करके ऊपर से नीचे हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल बनेगा और ये सिमेट्रिकल इधर बनेगा और ऐसे ये इधर सिमेट्रिकल बनेगा. और ये पेपर में जो इस कट के हिसाब से आएंगे तो आपके पास जो स्क्वायर आएगा उसके अंदर आपका यहाँ पे और यहाँ पे कट हो जाएगा. So the key to solving a paper cutting kind of question is
आप पेपर जहाँ फोल्ड हुआ है उसको उठा करके यहाँ इमेजिन कीजिए और उसको आप एक्सपैंड कर दीजिए सिमेट्रिकल तरीके से पूरे पेपर में। आप ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली और बेटर समझ आ जाएगा। पेपर कटिंग की तरह से ही एक और एग्जांपल है जहाँ पर आपको कहा जाता है पेपर फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग में हमने एक्चुअली पेपर कट किया एंड देन वी सॉ कि उसका किस तरीके से पेपर कट होने के बाद में डिफरेंट आपके डिजाइन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं पेपर फोल्डिंग की तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक पेपर दिया हुआ है और उस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है, उसको आप फोल्ड करेंगे तो वो पेपर अल्टीमेटली कैसा दिखेगा। सो लेट अस कॉल इट पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में क्या है, आपके पास एक पेपर दिया हुआ है और हम एज्यूम करते हैं दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट पेपर। So if it is a transparent paper and there is, say, there are few designs made like this, okay. Now how do we fold it? Folding can be done like if you divide it into half, you can do it like this also. You can do it the other way also, from top to bottom or bottom to top, or it can be diagonal also. So in this case, say we divide it like this and bend it here. Again, you have to be very careful as to how the paper is being bent. उसको किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, ये आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, तभी आप ये जान पाओगे कि पेपर फोल्ड होने के बाद किस तरीके का पैटर्न आपको नजर आएगा। अगर समझ लो इसी डिजाइन में हम पेपर को इस तरीके से राइट टू लेफ्ट फोल्ड करते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये जज करेंगे कि पेपर अगर फोल्ड नहीं हुआ है, जो पोर्शन पेपर का फोल्ड नहीं हुआ है, how is that being represented? Now this portion, if this is folded like this, we are moving this part, this half is being moved and it is being put on the other side. So we are not changing this part. Okay, so let us draw it. ये आपका हाफ पेपर है जो कि फोल्ड नहीं हुआ, so this will continue to look like this. Okay. What about the portion which has been folded? तो जो पोर्शन फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद में उसकी इमेज जो है वो मिरर इमेज बन जाती है। रिमेंबर, उसकी इमेज मिरर इमेज बन जाती है। सो व्हेन यू फोल्ड इट हियर, द स्मॉल एरो इज लाइक दिस, इट गोज ओवर देयर, द स्मॉल एरो विल लुक लाइक दिस एंड दिस इज हाउ द पेपर फोल्डिंग will appear. If we do it the other way around, then this portion has not moved, it remains just like this. This portion becomes the mirror image and it becomes like this. It doesn't become like this. All of you need to pay attention as to how it will become. ये जो बड़ा arrow है, is it a mirror image of this? No, it is not. Which means that it is incorrect. So जो portion fold नहीं हुआ, that remains like this. This portion getting folded, so which means it will become like this. Alright. So this is what we call as paper folding. There are few other types of visual reasoning problems also, but for that you need to watch our next video. Till then, keep practicing on this, keep your eyes and ears open. In the examination, read the question carefully, see all the figures and then decide whether it is correct, the answer that you are arriving at or not. Okay, take care.